लालच कैसे क्रिएटर्स बनाते हैं असली इंटरनेट की रेखा। सब मिलकर बोलो ये गेमर है असली एलीट। अगला हिस्सा करता है रिव्यू, करता है व्लॉग, कभी मस्ती कभी गंभीर टॉक। गेमिंग चेयर पे बैठा जैसे हो बॉस, हर पल उसका वीडियो लगे एक खास। सब्सक्राइबर को लो एक के या दिन के, उसकी मेहनत से सब हो जाता है ओके। अपना स्टाइल अपना जोन, बन गया यूट्यूब का मजबूत सिंहासन। शुरू किया जीरो से आज बन गया हीरो, कंटेंट में चमक वाइब्स में फ्यूरो। हर नए क्रिएटर को देता प्रेरणा, वी ग्रेड बन गया गेमिंग की असली प्रेरणा। तो अगर तुम भी हो गेम के दीवाने, जुड़ जाओ वी ग्रेड के अफसाने। सब्सक्राइब का बटन दबाओ बिना देरी, गेम का असली किंग बस एक ही वी ग्रेड भाई में। गेम का बादशाह, माइनक्राफ्ट हो या पबजी, हर खेल में है रास्तार। लाइव करता है स्क्रीन, दिल से खेलता है। लाइक कमेंट शेयर फैन पेज झेलता है। रात भर मेहनत करता कभी नहीं होता बोर, उसकी हर स्ट्रीम में मिलता है असली कोर। गेमिंग का जुनून फेस कैम की शान, थंबनेल पे क्लिक करो मिलेंगे व्यूज की खान। हेलो हेलो मनप्रीत, हाउ आर यू? हेलो मानवी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। देखो भाई, जब मेरा कुछ नहीं, आज गाइस हम खेलने वाले हैं हॉगवर्ट लेगेसी। मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ क्योंकि मैं किसी को टाइम दे रहा था, बस वो टाइम पे चले गया। बट कोई बात नहीं, जो चले गया उसका गम नहीं, जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। अब गाइस कोशिश करेंगे रोज लाइव आएंगे, ठीक है? 2026 से पहले अपने आप को चेंज करना है। खुश हूँ भाई मैं, बस ये है कि खुशी थोड़ी गम के लिफाफे में मिलती है मुझे। बट वो भी एक जिंदगी का पार्ट है। मेरे को खुशी जो गम के लिफाफे में मिलती है वो भी एक जिंदगी का पार्ट है, और मेरी जिंदगी तो वैसे ही झंडा है बेंचो। तो यूज टू हूँ भाई मैं, बट थोड़ा सा यार दर्द होता है, बट दर्द सहना सीख चुका हूँ। वो यार गरम गरम एकदम सही।
गला थोड़ी ना वो कर रहा ना मैंने अपना। रख लेना जी, अगे रख लेना। ओ हाँ, मैं अभी फेस कैम नहीं ना कर रहा। हाँ, और लाइट जगा दे यार तू, पीछे वाली जगा दे। क्या लाइट जगाई है भाई, मजा ही आ गया लाइट देख के। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्थी। वैष्णवी शर्मा, हाय एंड वेलकम टू द स्ट्रीम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस मेरी जान, बहुत टाइम बाद। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो भाई? मैं भी बढ़िया हूँ, चल रही है लाइफ, एंजॉयमेंट, फुल ऑन मस्ती एंड लाइफ में कुछ बड़ा कर रहा हूँ। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हर चीज़ भुला रहा हूँ धीरे धीरे। बुरा वक्त, बुरा सब कुछ। बट ठीक है। और वैशु कहाँ है भाई? वो पता नहीं, सो गई शायद। मुझे बता के नहीं गई वो, डिस्कनेक्ट हो गई है। सो गई होगी शायद। डिस्कॉर्ड पे थी थोड़ी देर पहले, बट हाँ मेरे को बिना बताए गई है, तो मुझे नहीं पता सो गई होगी। आई डोंट नो। बोला तो था उसने कि पहले तो वो कह रही थी मेरे पास ही रहेगा रात को फ़ोन, बट फिर कह रही मम्मी को देने जा रही हूँ, तो डिस्कनेक्ट होगी। उसके बाद मुझे पता नहीं सो गई है कि नहीं।
क्या हुआ, सब ठीक है आप दोनों के बीच में? सब ठीक है। हम दोनों के बीच में सब ठीक है। हम दोनों के बीच में जो ठीक है वो ठीक है। मैं ठीक हूँ। हम दोनों के बीच में जो है वो ठीक है, बाकी Menu reader. मैं तो Off. साइड में हूँ। Press space bar to toggle. हम दोनों के बीच में जो है वो ठीक है, बट मैं साइड में हूँ। मुझे ऐसा लगता है। बाकी भगवान जाने, मेरी किस्मत में वैसे भी धोखे लिखे हैं। अब पता नहीं ये देगी क्या नहीं, आई डोंट नो। अगर दे देगी तो भी कोई गम नहीं, अगर नहीं दिया तो खुशी होगी कि कोई अपने उस पे टिका हुआ है। बात पे बट कोई टिका नहीं है आज तक मेरे सामने अपनी बात पे, क्योंकि लोग मेरे को हेट करने लग जाते हैं और वो चीज मेरे को थोड़ी सी हर्ट। मुझे नहीं पता गाइस, मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ लोग मुझे हेट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है। मैं नहीं किसी को ब्लेम करता कि किसी उसकी गलती है या किसी की गलती है। गलती मेरी है। गलती मेरी क्यों है पता है? क्योंकि पता नहीं यार, पीपल हेट्स मी। जो वो चीजें मतलब जो वो चीजें करते हैं या करते थे स्टार्टिंग में, वो चीजें वो छोड़ देते हैं और मतलब एक टाइम होता है ना कि लोग पहले मेरे साथ सब वो रहते हैं टाइम में। मैं लिटरली मैं पूरा टाइम देता हूँ। मैं किसी को ये नहीं कभी बोला किसी को नहीं कभी बोलता मैं कि हाँ मैं बाहर हूँ या मैं काम पे हूँ, मैं नहीं तुमसे बात कर सकता या कुछ भी।
बट लोग बदल जाते हैं। आई डोंट नो, मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ और रखनी नहीं चाहिए। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, बट क्या करूँ यार। मैंने देखो यार, मैं एक बात बताऊं, मैं मैंने ना बचपन से बुरा वक्त देखा। मेरी लाइफ, मेरे को पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है, बचपन से। It was wonderful. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. That was quite something. I am indeed a student, but it was... I'm eager to get a few cobwebs and some... I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. स्टोरी कोई ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, वो मुझे पता है भाई, सब ठीक हो जाएगा। मेरी लाइफ में पहले बुरा होता, फिर मेरे साथ अच्छा होना शुरू हो जाता। ये एक बार ही नहीं हुआ, ये बहुत बारी हो चुका है। तो और जब जब ये होया, मैं तो रो देता हूँ या छोड़ देता हूँ मैं, बट देखो मेरे साथ जब जब ये ऐसी चीज होती है, मैं तो या तो मैं स्ट्रीम करके बोल देता हूँ, थोड़ा सा रो देता हूँ, ठीक है,
मेरी लाइफ में रियल मतलब शुरू से ऐसा ही हुआ, जब जब मेरे साथ ऐसी बुरी चीज हुई है या कुछ भी मेरे साथ बुरा हुआ, मैं ऐसे ही आ जाता हूँ लाइव स्ट्रीम पे। एक ये छोड़ो, मेरे साथ एक दिसंबर में ऐसे ही हुई थी, 31 दिसंबर, साल के स्टार्ट होने से पहले मेरे साथ कुछ हुआ था, और नया गिफ्ट था वो मेरे लिए, बट अच्छा है। और इस बार भी अगला साल स्टार्ट होने वाला है, और साल के पहले ही कुछ ना कुछ मुझे लाइफ में चेंजिंग, लोगों में चेंज, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो चीज़ें पहले होती थी वो नहीं होती अब। अ, लोग बदल जाते हैं, मगर ये उनकी गलती नहीं है। गलती गलती किसी की नहीं होती यार, ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती जो है ये किस्मत की है मेरी। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या लिखा, गेम का बादशाह माइनक्राफ्ट हो या बट ठीक PUBG, है। खेल में है रास्ता है, लाइव करता है स्ट्रीम, दिल से खेलता है लाइक। मैं तो पता नहीं सबसे ओवर एक्सपेक्ट कर लेता हूँ, मैं एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगा लेता हूँ कि कोई तो है। मगर मेरी किस्मत में कोई नहीं है। कोई आ जाता है तो मेरे को ही भुला दिया जाता। मैंने तो भाई बचपन से ही बुरा वक्त देखा है, ठीक है ना, और कितना बुरा हो जाएगा मेरे साथ, क्या बुरा हो जाएगा मेरे साथ, जो होना हो जाए। मैं पक गया हूँ माचो। मैं लिटरली खत्म हो गया हूँ भाई, मैं अंदर से। हर बार हर बार एक ही चीज होती है मेरी जिंदगी में, जो लोगों को मैं पूरा टाइम देता हूँ, यहाँ तक कि मैं लोगों के लिए मतलब मैं लोगों के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी। एक टाइम पे ऐसा टाइम था वो, मैंने किसी के लिए अपनी जॉब छोड़ दी, ठीक है, मगर वो मेरे को टाइम देने के लिए, मतलब मेरे लिए नहीं सोचा उसने। वो इंसान खुश हो रहा है किसी और को मिलने के लिए, बट मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, खुश रहे वो, जो भी है जैसा भी है, सब खुश रहे यार अपनी लाइफ में। मैं तो खुश ही हूँ।
मैं दुखी नहीं होता। बट जो भी है, कुछ टाइम के लिए सही मेरे को बहुत खुशी होती है, चाहे मेरे को बाद में वो हो जाता है, बट मेरे को जो खुशी मिलती है कुछ टाइम के लिए, आई लव इट यार। अभी भी मेरे को खुशी है, अभी भी कुछ बिगड़ा तो नहीं है, बट कभी भी बिगड़ सकता है, और मुझे पता है कभी भी बिगड़ सकता है। मैं अब रो रो के भी कितना ही रो लूंगा मैं, एक टाइम के बाद रो आंखों में से आंसू भी बंद हो जाएंगे, आंसू बंद हो जाएंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। It appears we are almost... Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly, to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do not Hang on!
ये मैंने गाइस मेरे पुराने ग्राफिक कार्ड पे खेली थी. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. उस समय एक ग्राफिक कार्ड मेरे पास नया ग्राफिक कार्ड नहीं था, पुराने वाला था. अब ये नया वाला है, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी में चला देगा इसको. Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. मैंने बेकार if you सी like ग्राफिक्स to में look around खेला a bit. था. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. मैंने बेकार ग्राफिक्स में खेला था, आज अच्छी ग्राफिक्स है. ओए होए होए होए. गाइस ये पता क्या है, पीछे जो था वो मेरी जिंदगी है और आने वाला कल है ये मेरा. वो अंधेरा मेरी लाइफ है और ये Farther from उजाला London मेरी than the carriage जिंदगी travelled. आने वाली. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. ये Ah, up there.
We're close now. It's just ahead. Steady yourself! Reparo! Almost there! Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Dumbledore. Professor, this statue... This may have been his home. Okay. सब सही तो चल रहा था, फिर क्रैश क्यों हुआ? मेरी सी ड्राइव में जगह भी नहीं है ना, बहुत दिक्कत दे रही है वो। सिर्फ 1 GB फ्री पड़ी है उसमें। कोई टंगियां च जिन्ना लंगना सी लंगिया पर मेरे बाईदा तेरी रहमतों का शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया हो। जिंदगी रही है गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया हो। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। शिव जी दा डमरू वज्जिया, मेला देवतियां दा लग्गिया। शिव जी दा डमरू वज्जिया, मेला देवतियां दा लग्गिया। झट नंदी उठ के भज्जिया, नंदी उठ के भज्जिया। माता पार्वती लै आया,
भोले ने तूणा लाया लाया महादेव ने तूणा लाया भोले ने तूणा लाया लाया महादेव ने तूणा लाया। शुक्र है। खुश रहो भाई। जैसे भी हालात हो बस हंस के टाल दो। Are you alright? Are you kidding me? यहाँ से चालू होगी। You're hurt. गेम क्रैश होगी जी। Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. लोग अपना काम करेंगे, हम अपना करते हैं। कल से गाइस पूरे टाइम पे लाइव स्ट्रीम होगी, क्योंकि लोगों के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो मेरे पास सब लोगों के लिए टाइम नहीं है। मेरे को पता है मेरी कुंडली बहुत बेकार है, बट अकेली मेरी खराब नहीं है। मैं क्या करूं, स्वाभिमानी इंसान। How far did that port key take us? Farther from London than the carriage Gotcha. travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, Rolly, those yeah. ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that अबे यार brought us देखो here? लैग नहीं है, A good question. बट Miriam ग्राफिक spent लैग करता है। years ग्राफिक searching कार्ड for मेरा evidence of a मतलब long अब forgotten पता नहीं form of ग्राफिक कार्ड ancient चलना बंद magic. कर देता क्या होता है, बीच में जो गर्र गर्र करके बंद हो Ancient जाता है वो। magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, अबे आ जाए यार। but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. मुझे लगा था हमारे प्यार के बीच में कोई तीसरा आ Is गया। that ice? It's not cold enough here.
जब It पता appears to लगा be a sort of तो वो enchantment. तीसरा Someone मैं wanted ही to था। block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Excellent! That was a bit rougher than I'd expected. Ah, up there. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo! तुम्हें पता गाइस पिंकी प्रोमिस हो चाहे प्रोमिस हो सब तोड़ देते हैं लोग कसमें हो प्रोमिसेस हो Almost there. एवरीथिंग इज ब्रेकेबल लोग दिल तोड़ देते हैं माचो प्रोमिस तो माँ की बहुत दूर की बात है Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home. प्लीज बंद मत होइयो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है भाई That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course.
This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. अब कट When was the अब last कुछ ना time कुछ this दिखलाएगा vault was ही फिर accessed? बदल A goblin has been stationed at my desk. सेव का आया कोई ऑप्शन सेव आया ना है अच्छा ठीक है Of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus.
Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. Revelio. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time.
choice. I'm going to have to fight my way out of here. Lumos. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know.
But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. Hello, Clasher. I only meant that the Welcome to your stream. instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I Wow, must hi. insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Okay. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. ओ भाई ये क्या है? I know a way out. Professor! Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? अबे आवी. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Not bad. मेरा ये वाला ग्राफिक आज ठीक है, तो बीच में थोड़ा सा घू हो जाता है कभी कभी गर्म होने में. क्या टाइम था भाई वो. हैरी पॉटर देखता था मैं. मस्त नाचो, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, स्कूल ट्यूशन अपना देखा, हैरी पॉटर सो गया. उस समय टेंशन भी नहीं होती थी. जो चाहिए बोल दिया, जो खाना है बोल दिया, मम्मी पापा को बोलो और काम करवा लो. पापा जी ये चाहिए, कोई नहीं बेटे हो मिल जाएगा. मम्मी ये खाना है, बन जाएगा. चलो बन तो अब भी जाता है, दीदी बना ही देते हैं. बट फादर इज फादर.
जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। इस साल भाई 2026 आने वाला है यार। मार्च 2026 आ जाएगा। लाइफ में मार्च कुछ नहीं उखाड़ा अभी तक, जस्ट डूइंग नथिंग। क्या हो गया भाई, लोडिंग पे फंस गया? चलेगा क्या? ओ चल तो रहा है। डू 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 ओ डू 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 डू। कुचड़ी कुचड़ी ता ती ता तो दो ता ता दी रा ता रा दी री रा दो ता रा रा दी रा रा डिंग चिका डिंग चिका रे डिंग जिगा रे ला 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 ला। ओके वो नीचे देखो, नीचे यहाँ पे इस तरफ दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है, वो लोडिंग है। इस तरफ जो दिख रही है तुम्हारे को नीचे, वो लोडिंग है। आई डोंट नो कब तक होगी। हो गई। Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. मेरे को लिखा हुआ पता क्या आता है, आउट ऑफ मेमोरी। माँ 24 GB रैम है, और क्या मैं अब 128 GB रैम डाल दूँ? अभी तो रैम भी बड़ी महंगी हुई भी है, डाल देता मैं, बट अभी औकात से बाहर है। वैसे भी मेरी औकात के बाहर ही थी, डाल भी कह सकता था मैं। बी की मांगनी थी मैंने माँ। कभी किसी को पूछता, कभी किसी को। रुको भाई, ठीक है, अल्ट्रा पे भी 60 FPS कांस्टेंट दे रहा है गेम। फुल हाई ग्राफिक्स भी 60 FPS पे चल रहे हैं। और क्या चाहिए स्टोरी गेम में? स्टोरी गेम में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करने ही नहीं चाहिए। 60 बहुत इनफ, 60 FPS is enough in story games. अब पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुई मैच। बट ठीक है, मजा आ रहा है। पता लग रहा है। दो 2026 क्या लेके आएगा? हर साल यही सोचता हूँ मैं कि मेरा अगला साल कैसा जाएगा। एवरी ईयर
इस साल मेरे को अच्छा लगा। ये साल मेरा अच्छा गया। पहले मैं जॉब कर रहा था, फिर मेरी लाइफ में वैशु आई, ठीक है। फिर उसके आने से थोड़ा सा मैं चेंज हुआ। अब पता नहीं, उसके आने से मैं चेंज हुआ, अब वो भी चेंज हो रही है थोड़ी सी किसी और के आने से। जो इंसान को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना, मेरे मतलब वेट करना मेरा कि कब ये फ्री होगा, कब ये मेरे को टाइम देगा, अब उसको जब टाइम मिल रहा है तो वो मेरे साथ टाइम नहीं बिताना चाहती। कोई बात नहीं। Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough! was... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Curiosity. A desire to learn?
I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in quick to learn. Ravenclaw. मेरे को एक बारी बता दो तो मैं सीख जाता हूँ बहुत जल्दी. कौन सा लू बताओ गाइस. इसने तो मेरे को ये इसमें डाल दिया है. गरुड़ दोबार. And you've a ready mind, quick to learn. ठीक है, इसी में जाओ. गरुड़ दोबार में नहीं जा रहा मैं. You belong in Ravenclaw. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Thank you, Auntie Ji. Bye bye, Auntie Ji. Good night, Auntie Ji. Looks like everyone's gone. Better head to the common room.
Oh, map. I just have to wait for the right moment. Must be different. Starting Hogwarts in your shoulders the right spot. Hello. Lumos. 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 Revelio. Lumos. 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 कोई देख नहीं रहा माचो इग्नोर ही कर दिया मैंने. Just have to wait for the right moment. Revelio. This should be interesting. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself and a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Made the mistake of leaving my potions homework in the common room. I'm convinced he's absconded. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... Ah! That is not how... Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I'm afraid I'm not much for memorizing constellations. Enough to worry about on the ground. Well, you should know that all fifth years must take astronomy. However, I think you will feel differently after one night up on the tower. A quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! I'm not sure this is the right spot. My sister will be home for the I Oh, want hi him to there. be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find कितने it. क्यूट है यार ये तो. Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is.
Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. He did teach me a few things before term, but that's all I can tell you. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your dittany. इसके roots में And good luck to you too on ये your अपने first roots day. में वो करने को बोल रही है, ठीक है भाई? Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. ठीक है भाई. Can't imagine starting a new school this late. अच्छा नीचे जाना है. तभी मैं सोचूं लोगों को स्कूल और कॉलेजेस क्यों पसंद है. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. आजकल की लड़कियों को Well, अपने you रूट्स are में here. डलवाने की Make आदत the है. most of it. मतलब You only have one first day बातें at मतलब Hogwarts. बकचोदी पेलने की. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. चलो मैडम जी 1 मिनट मेरे को सीधा होने दो पहना. This way. हाँ हाँ रुको भाई. भाई ठीक होने दो यार. टेढ़ा मेढ़ा होके बैठा हूँ मैं. The guide will give you opportunities to practice your magic Revelio. and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust? And see Revelio. what details the field guide can provide.
Clever, isn't it? Eyes open for more opportunities Okay, like powers that, hai bhai wo, sorry. inside and outside of the castle. Revelio. मैम ये No सीढ़ियाँ time to कितनी waste. बड़ी हैं? You've classes to attend. मैम कितनी बड़ी सीढ़ियाँ हैं भाई, लिफ्ट लगवाओ यहाँ पर। Revelio. Lumos. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. भाई मैं सिखाता हूँ तुम्हारे को ये रिवेलियोस, मेरे को आता है प्रॉपर तरीके से मैं बताऊँ। रिवेलियो नहीं है, लाइट बल्ब ये लाइट जगाने वाला, उनको मैं बताऊँगा। You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Oh.
I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. और प्रोफेसर चलो. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls.
bump on my head on herbology last week. Cotton fell out of my glue. Protego! Lumos. Revelio. Revelio. But surely those were coming. Revelio. 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 What am I missing? Protego. क्या है? Not sure he's in at the present moment, the headmaster. Would be sure to tell him how very much you despise him. Might as well be surrounded by Jarvis. चलो गाइस क्लास में चले गए। Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Levioso.
Let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. क्या है? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso! Good. Now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso! Protego! Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Stupid Levioso! If only all of my students were this again. I do enjoy lively duel. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but Understood, Professor. So, again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is... Nice work. Protego! Revelio! I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. सोए नहीं सोया ही हाँ भाई अभी जस्ट स्टार्ट ही करिए गेम थोड़ा सा दूसरी गेम में खत्म हो गई थी तो कोई गेम खेलने वाला है नहीं तो मैंने कहा यही स्टार्ट कर लेते हैं
In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. My favorite room in the school is the library. वो तो अभी बहुत पीछे है। ये क्या मजाक है? Professor Ronan tends to go on a bit. You sometimes have to remind him. भाई मैं तो कोई गेम खेलने वाला है नहीं, ना कोई खेल रहा आजकल। मैं क्या फिर खुद ही कुछ ना कुछ तो सिंगल प्लेयर। अभी एक गेम आ जाएगी थोड़े दिनों में, उस गेम को तो मैंने खेलना है। एक गेम आई हुई है स्टीम पे, 102 रुपए की आई हुई है, गोल्फ टुगेदर, मतलब बड़ी मस्त गेम है ये। Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. सही है सर, खेलो, गुड नाइट। ओके कदुए। Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me.
Accio. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the Accio से summoning क्या हुआ charm सर? to the किलिंग कर्स test, मारो. right? भाई किलिंग कर्स से भी ज़्यादा अच्छी चीजें आएंगी. टेंशन भी ले रहा. So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres. Accio, relinquish your charm. That's it! Now think of this like gobstones, if you will. But in excellent stay focused. Splendid! भूल गया था मैं. Don't lose your composure. मैं भूल गया था कैसे Very चलाना. good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. लड़की है. और तेरे से तो हारूंगा ही नहीं मैं. Here we go. हार गया मैं. That is how it's done. हार गया मैं. Accio. Watch this. ओए हैकर है माचो. Yes! That's it! Let us see this. Phew. Accio. Well done. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Okay. This round settles it all. Be sharp. इस बार नहीं आया 50 कुछ करा भाई. There we go. Accio. Excellent control there. हाँ भाई. Watch this. That is how it's done. Accio. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. बैठ दी चीची. Here we go. Yes! ये क्या स्कैम Do है? not think I will start going easy on you now. Accio. Brilliant! ओ उसने मेरा बुक.
Very good, both of you. Well done. Gunkalo. I just lost to a girl. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I think Professor Ronan wants to talk. Until next time. Of course, you can. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Yes, sir. Revelio. Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Hello, Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Love you. Revelio. Revelio. किसी को तो बोल ही सकते हैं.
Revelio. वाह बिल्ली वाह Do you think it's possible to spend... Revelio. Lumos. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ah, there you are.
You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. Wonder where the flying page is. Revelio. क्या बकचोदी है? अबे आजा, 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 आजा। ओ भाई आजा। Levioso! Accio! Got it. मैं उसको फोड़ रहा हूँ। ठीक है मैं। हो जा भाई। A flying page must be around here somewhere. Revelio! Accio! Brilliant. I trust the preliminary tasks weren't... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Wiggle, wiggle, wiggle. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it! Very good. If you would like to practice mending something, with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Heartbreak. Reparo. Nicely done. ये गेम मेरे को मेरी जिंदगी जीना सिखा रहा है क्या? Heartbreak. Heartbreak तो है। ये पुराना टाइम था जब लड़कियों के साथ धोखा होता था। आज का टाइम है जब लौंडों के साथ ही धोखा हो रहा है। हिंदी चिक्की है यार। खुल जा। There's something Revelio. in there. I just know it.
Hello, looking for me? Huh? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. To extend an invitation. Myself. I thought you might enjoy a better. चलो भाई कितना टाइम हुआ? 2:15 हुए। चलते हैं भाई सोने। मेरे को सुबह मेरे को काम भी करने हैं बहुत सारे। अब काम पे फोकस करना है थोड़ा सा, तो सुबह उठ के काम भी करना है। और यस थोड़ा सा आगे बढ़ो। मज़ा आया गेम खेल के। अभी इसको पार करेंगे हमने। बैटलफील्ड से तो मैंने पूरी पार कर दी है, ठीक है। अब इसको पार करना शुरू करूँगा। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे ये गेम खेलते जाएंगे और इसको पार करने की कोशिश करेंगे। एंड हाँ मज़ा आया खेल कर। आई होप कि तुम सबको देख कर भी मज़ा आया हो, जितने भी लोग देख रहे थे आज की लाइव स्ट्रीम। ठीक है ना। वैष्णवी शर्मा मज़ा आया भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। मज़ा आना चाहिए यार ज़िंदगी में, और क्या चाहिए, है ना भाई। मज़ा आया, तुम सबको देख के मज़ा आया, मुझे खेल के मज़ा आया। सो यस अच्छा लगा कि तुम सबको अच्छा लगी गेम। कल कितने बजे आओगे? कल कितने बजे आऊँगा? 10:30 बजे, 10 या 10:30 बजे आ जाऊँगा। कोशिश करूँगा उससे पहले आने की, ठीक है। अगर हुआ तो उससे पहले भी आ सकता हूँ। अगर कल मैंने कहीं जाना नहीं है, कल मैं घर से ही सारा ऑपरेट करने वाला हूँ। तो कल मैं कोशिश करूँगा 8, 8:30, 9 बजे लाइव चालू कर दूँ, क्योंकि अब वैसे ही कोई खेलने वाला नहीं है मेरे साथ, और किसी के पास टाइम नहीं है। मतलब कईयों के पास टाइम नहीं है। अब सब बिजी चल रहे हैं, इवन मी। मैं भी खुद भी बिजी चल रहा हूँ। सो
यस। और अगला साल मेरा थोड़ा सा है डाउनफॉल वाला भी है। अब डाउनफॉल मेरे को है, किस चीज़ की है वो मैं अभी नहीं बता सकता, बट हाँ बट अपफॉल जो है वो अच्छी होगी। आई होप उसको मैं मैनेज कर पाऊँ और अच्छे से उसको कंट्रोल कर पाऊँ अपॉर्चुनिटीज़ को। करता है रिव्यू, करता है व्लॉग, कभी मस्ती कभी गंभीर टॉक, गेमिंग चेयर पे बैठा जैसे हो बॉस, हर पल उसका वीडियो लगे एक खास, सब्सक्राइबर गोलो एक के या दिन पे, उसकी मेहनत से सब हो जाता है ओके, अपना स्टाइल अपना जोन, बन गया यूट्यूब का मजबूत सिंहासन, शुरू किया जीरो से आज बन गया हीरो, कंटेंट में चमक वाइब्स में फ्यूरो, हर नए क्रिएटर को देता प्रेरणा, किसी के जाने का क्या, किसी के जाने का क्या, किसी के जाने का सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बिना देरी गेम का असली किंग बस एक ही VGrade भाई में। Are you sad? नहीं भाई, sad for what? Sad for what? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आप रो रहे थे। वो मैं नहीं रो रहा था, वो मैं नहीं रो रहा था, वो मेरा दिल रो रहा था। उसने अपनी भड़ास निकाल ली, अब उसके पास कुछ है ही नहीं, ना उसके पास कुछ रोने के लिए बचा, ना उसके पास कुछ खोने के लिए बचा। सो यस, करता है रिव्यू, करता है व्लॉग, कभी मस्ती कभी गंभीर टॉक, गेमिंग चेयर पे बैठा मेरा दिल रो रहा था, उसने रो के अपनी भड़ास निकाल रही, और अब ना मेरे पास कुछ रोने के लिए बचा, ना खोने के लिए बचा। सो यस, अब जो भी है, अब फ्यूचर बनाना है, 2026 में लाइफ बनानी है, अच्छी सी पैसे कमाने हैं, बस हर साल बस थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अब इस बार अपने आप को अब कंट्रोल करना है कि फालतू चक्करों में नहीं पड़ना, नहीं तो एट द एंड भाई मैं तीसरा इंसान बन जाता हूँ, जिसकी वजह से लोगों के मतलब लोग दुखी होते हैं। मैं वो तीसरा इंसान नहीं बनना चाहूँगा अब किसी की भी लाइफ में, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। मैं कोई तीसरा इंसान नहीं हूँ जिसकी वजह से किसी की लाइफ बर्बाद हो या कुछ भी हो। अब मैं साइड में हूँ सबकी जिंदगियों से, सबसे। अब मैं अपना फोकस करूँगा सिर्फ एक ही जगह पे, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है कुछ भी सहने करने की। कैसे क्रिएटर्स बनाते हैं असली इंटरनेट की रेखा, सब मिलकर बोलो ये गेमर है असली एलीट। अगला हिस्सा करता है रिव्यू, करता है व्लॉग, कभी मस्ती कभी गंभीर टॉक, गेमिंग चेयर पे बैठा जैसे हो बॉस, हर पल उसका वीडियो लगे एक खास, सब्सक्राइबर गोलो एक के या दिन पे, उसकी मेहनत से सब हो जाता है ओके, अपना स्टाइल अपना जोन, बन गया यूट्यूब का
मजबूत सिंहासन शुरू किया जीरो से आज बन गया हीरो कंटेंट में चमक मैं हूँ आपके साथ, ठीक हो जाएगा क्या। थैंक यू, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। और इतनी देर तक बैठने के लिए शुक्रिया यार। आप शुरू से लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, मतलब जब से स्टार्ट हुई है आप तब से बैठे हो, शुक्रिया। और भी लोग बैठे हैं भाई, जो गाइस स्ट्रीम पे हैं प्लीज़ मेक श्योर एक आधी आप कमेंट कर दे, जो भी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एक आधी बारी कमेंट कर दे या कुछ भी आप लिख दे बस, और कुछ नहीं है, बस हौसला मिलता है। लाइक करनी करा तो लाइक भी कर दे, बस थोड़ा सा हौसला मिल जाता है, एक बस हौसला ही मिलता है भाई, ताकि लोग आते हैं तो सबके दिल का गेमर, हर वीडियो बनता है कंटेंट का फ्लेम थ्रोवर, दिल से करता है स्ट्रीम बिना किसी लालच के, ऐसे क्रिएट सुनाते हैं असली इंटरनेट की रेखाएं। VGradeYT सबके दिल का गेमर, हर वीडियो बनता है कंटेंट का फ्लेम थ्रोवर, दिल से करता है स्ट्रीम बिना किसी लालच के, ऐसे क्रिएटर्स बनाते हैं असली इंटरनेट की रेखाएं। सब मिलकर बोलो ये गेमर है असली एलीट। अगला हिस्सा करता है रिव्यू, करता है व्लॉग, कभी मस्ती कभी गंभीर टॉक, गेमिंग चेयर पे बैठा जैसे हो बॉस, हर पल उसका वीडियो लगे एक खास, सब्सक्राइबर गोलो इनके या दिन पे, उसकी मेहनत से सब हो जाता है ओके, अपना स्टाइल अपना जोन, बन गया यूट्यूब का मजबूत सिंहासन। शुरू किया जीरो से आज बन गया हीरो, कंटेंट में चमक वाइब्स में फ्यूरो, हर नए क्रिएटर को देता प्रेरणा, VGrade बन गया। I am with you, don't worry. I am with you, don't worry. मैं सभी स्ट्रीम पर रहूंगी आपकी, चाहे आप मुझे हाइड हा दो, ठीक है भाई, हाइड दे दो होता है वैसे, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैं आपको सपोर्ट कर नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू मीन्स अ लॉट, थैंक यू। रात भर मेहनत करता कभी नहीं होता बोर, उसकी हर स्ट्रीम में मिलता है असली कोर, गेमिंग का जुनून फेस कैम की शान, थंबनेल पे क्लिक करो मिलेंगे व्यूज की खान, माइनक्राफ्ट में किला पबजी में स्क्वाड को साफ, उसके कंटेंट में मसला हर सीन है धमाकेदार, वन टेक लीजेंड बिना स्क्रिप्ट के कमाल, भाई VGrade करता काम जैसे हो कोई जादू का हाल। VGrade सबके दिल का गेमर, हर वीडियो बनता है कंटेंट का फ्लेम थ्रोवर, दिल से करता है स्ट्रीम बिना किसी लालच के, ऐसे क्रिएट सुनाते हैं असली इंटरनेट की रेखाएं। VGrade सबके दिल का गेमर, हर वीडियो बनता है कंटेंट का फ्लेम थ्रोवर, दिल से करता है स्ट्रीम बिना किसी लालच के, ऐसे क्रिएटर्स बनाते हैं असली इंटरनेट की रेखाएं। सब मिलकर बोलो ये गेमर है असली एलीट। अगला हिस्सा करता है रिव्यू, करता है व्लॉग, कभी मस्ती कभी गंभीर टॉक, गेमिंग चेयर पे बैठा जैसे हो बॉस, हर पल उसका वीडियो लगे एक खास, सब्सक्राइबर गोलो इनके या दिन के, यस यू कैन। कहाँ बात कर तो रहे हो? बन गया यूट्यूब का मजबूत सिंहासन। शुरू किया जीरो से आज बन गया हीरो, कंटेंट में चमक वाइब्स में फ्यूरो, हर नए क्रिएटर को देता प्रेरणा। डिस्कॉर्ड पर मैं डिस्कॉर्ड नहीं ज़्यादा चलाता यार, बस मैं डिस्कॉर्ड पे तभी आता हूँ जब मैंने कुछ करना होता है, लाइक काम होता है या दोस्त आए होते हैं, मैं तभी डिस्कॉर्ड ऑन करता हूँ। मैं ज़्यादा डिस्कॉर्ड यूज़ नहीं करता। मैं सिर्फ जब दोस्त आते हैं तभी मैं डिस्कॉर्ड आता हूँ, और मैं ज़्यादातर मैं काम पे फोकस कर रहा होता हूँ। आजकल वैसे भी नया बिजनेस चालू करा है, सो उसके कारण मेरे को टाइम नहीं मिलता, बट यस मैं थोड़ा सा आजकल उसी पे ज़्यादा फोकस हूँ, एंड
डिस्कॉर्ड पे तो मैं किसी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ जब मैं पब्लिक में बैठा हूँ, लाइव स्ट्रीम पे हूँ, पब्लिक में बैठा हूँ और सभी आ रहे हैं, तो आप भी आ सकते हो पब्लिक में। और वैसे पब्लिक में अगर बैठा हूँ तो मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत करूँगा मैं आपका अगर मैं पब्लिक में बैठा हूँगा तो, ठीक है ना। कि मैं डिस्कॉर्ड पे ज़्यादा नहीं बैठता। अगला हिस्सा करता है रिव्यू, करता है व्लॉग, कभी मस्ती कभी गंभीर टॉक, गेमिंग चेयर पे बैठा जैसे हो बॉस। डिस्कॉर्ड पे बैठ के करूँगा क्या मैं, वो सोचता हूँ। गेम खेल रहे हैं, दोस्त सारे बैठे हैं तो अच्छा लगता है। अगर दोस्त नहीं बैठे साथ में, गेम नहीं खेल रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी अब गेम कोई खेलता नहीं है, मैं डिस्कॉर्ड ऑन करता नहीं इतना, तो मेरे को ऐसा पता नहीं लगता कि कोई गेम खेल रहा है, कि कौन बैठा है, क्या नहीं है। मैं सुबह 9 बजे से चालू होता हूँ काम करना, ठीक है। मैं लिटरली सुबह 9 बजे चालू करता हूँ काम करना और 8 बजे तक, 8:30-9 बजे तक मैं काम ही करता रहता हूँ। जब से अपना बिज़नेस चालू करा मैंने, तब से तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं, मेरे को ये है कि एक बारी स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ों को टाइम दे सकता हूँ। अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ, जस्ट स्टार्ट करा है, सेकंड मंथ होने वाला, मतलब सेकंड मंथ होने वाला मेरा, जब से मैंने स्टार्ट करा है। पिछले मंथ का स्टार्ट करा हुआ था मैंने, तो मैंने 15,000 रुपये इस बार अपने जेब से दिए हैं, किस्तें ये वो फलाना बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ जा रहा है मेरी उसमें। कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल थी, वो मैं अभी स्ट्रीम पे नहीं बताई, बट हाँ जो मेरी फैमिली है उनको पता है, और बस और किसी को मैंने इतना कुछ बताया नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितना मैं प्लस में जा रहा हूँ, कितना माइनस में जा रहा हूँ। बस सबको अच्छा दिखा देता हूँ कि सब, मतलब जितना भी है सबको सही दिखा देता हूँ कि हाँ भाई अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, जैसा भी है चल रहा है। बट बैक एंड पे थोड़ा सा दिक्कत चल रही है अभी, बट मैनेज कर लूँगा मैं। अगर कुछ भी हुआ तो भी मेरे को ही मैनेज करना है। अब मैं किसी से ना हेल्प लेता हूँ, ना मैं किसी को कुछ बोलता हूँ, क्योंकि यार आदत नहीं है ना शुरू से कि किसी को कुछ बोलूँ, क्योंकि यार नहीं होता मुझसे। थोड़ा सा स्वाभिमानी बोल सकते हो, ठीक है ना। नहीं झुक नहीं सकता मैं, मेरे को शर्म आती है मांगने में किसी से भी, और मैं लाइव स्ट्रीम पे भी नहीं इतना बोलता किसी को, क्या सिर्फ लाइक करने को बोलता हूँ, वही नॉर्मल होता है वो तो। बाकी लोग अगर सुपर चैट अपने दिल से करते हैं तो वो अप्रिशिएटेड है। बाकी हाँ मैंने ये सब कुछ यहाँ पे ये लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। नीचे सुपर चैट का ऑप्शन आता है, तो मैं इतना किसी से ना मांगता हूँ ना, वो होता है कि हाँ भाई जिसकी जो देना चाहते हैं वो बिना कहे दे भी देते हैं, और बस मज़े मारते हैं हम तो लाइफ से। बाकी मैं डिस्कॉर्ड पे बात नहीं कर पाऊँगा यार, आई एम सॉरी, क्योंकि डिस्कॉर्ड हो गया मतलब वेस्ट है यार। मतलब जब तक आप गेम नहीं खेल रहे मेरे साथ, या मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा, तब तक डिस्कॉर्ड पे बैठना नॉट वर्थ यार। लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ तो तुम डिस्कॉर्ड पे आ सकते हो, गेम्स खेल सकते हो मेरे साथ, कुछ भी करो। अगर हाँ मैं मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहा हूँ तो डिस्कॉर्ड पे आओ, गेम्स खेलो,
मैं तो रेडी रहता हूँ सबके साथ खेलने के लिए और सबको टाइम देने के लिए। बस मेरे पास किसी के लिए मतलब किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं होते, बस मेरे पास ही होता है सबके लिए टाइम। लोगों के लिए पास मेरे लिए टाइम नहीं होता, मैं सबको टाइम दे देता हूँ। अगर कोई भी मेरे को आवाज़ मारता है या कोई भी बोलता है आ जा, या कोई भी मेरे को बोलता है कि हाँ भाई क्या फ्री हो, मैं किसी का दिल भी नहीं दुखाता, चाहे मैं काम कर रहा होता हूँ तब भी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल देता हूँ। टाइम इज़ मनी बट सम टाइम बस यही ज़िंदगी चल रही है आजकल। ये ज़िंदगी अच्छी चल रही है। लोगों को टाइम दो, जब उनका अच्छा टाइम चालू हो जाए तो वो टाइम नहीं देते तुम्हारे को, या उनको दूसरा कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो वो टाइम नहीं देते तुम्हारे को। तो ये चीज़ है लाइफ की, एक रूल है। देखो भाई, हर चीज़ का बदलने का टाइम होता है, ठीक है। जब चीज़ पुरानी हो जाती है लोग नई ले लेते हैं, वैसे ही इंसानों में भी है। जब कोई इंसान से बंदा पक जाता है या कुछ भी हो जाता है, ठीक है, लोगों के पास नए दोस्त भी बन जाते हैं, ठीक है, नए रिश्ते बन जाते हैं, लोग भूल जाते हैं इन शॉर्ट। और इस साल बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई मैंने बहुत चीज़ें करी, मैंने पैसा भी लगाया, मैंने बहुत कुछ करा। अगले साल मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं मतलब यार अब थोड़ा सा दूर हो रहा हूँ सबसे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि देखो, मेरे लिए किसी के पास आज तक ना टाइम था ना है, तो अब मेरे पास भी किसी के लिए भी टाइम नहीं है और ना होगा, क्योंकि मैं ही हूँ यार बस ऐसी चूतिया बना हुआ इस दुनिया में। कोई भी किसी का सगा नहीं है, सब अपने मतलब टाइम पास के लिए मेरे को यूज़ करते हैं कि हाँ भाई इसके साथ ये बेल लड़ा है, इसको जब आवाज़ मारो आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता मेरा, मैं फ्री नहीं होता हूँ, बट मैं सबको टाइम देने की कोशिश करता हूँ। बट हाँ, अब से थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करना पड़ेगा मुझे। वापस से VGradeYT को पुराने वाले फॉर्म में आना पड़ेगा जो वो था पहले से, और पहले था वो। बस मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें दबी पड़ी हैं, जब एक बारी बस क्लियर हो जाए मेरे सब कुछ। वैसे तो मेरे को क्लियर है, बट एक बारी सामने वाला भी क्लियर कर देना तो आई विल टेल यू ऑन स्ट्रीम कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। नए साल में हो जाए या नए साल से पहले हो जाए, कुछ पता नहीं है। बस जब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब मैं किसी को भी बोलता हूँ कि हाँ भाई मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, या मतलब मैं किसी चीज़ के लिए बोलता हूँ तो मेरे खिलाफ ही हो जाते हैं लोग कि तुम गलत हो, दूसरा बंदा कोई नहीं गलत है। तो
तीसरा मतलब मैं तो अपना समझ के मना करता हूँ, बट मैं किसी का अपना हुआ नहीं। ठीक है, मैं हो भी नहीं सकता किसी का अपना। मैं सिर्फ यूज़ करने लायक है ये चीज़, लोग यूज़ करते हैं, थ्रो कर देते हैं। हाँ, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं यार। मैं आपको यूज़ नहीं करूँगी अभी, वैसे नहीं मैं बोल रहा, बट हाँ मैं अब दूर हो गया हूँ सबसे। अब सिर्फ मनी लोग बोलते हैं मनी कैंट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन बाय हैप्पीनेस। जितना पैसा हैप्पीनेस मतलब जितना पैसा हैप्पीनेस कर सकता है ना लोग हमारी लाइफ में, उतना कोई इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, तुम दुनिया की सारे हैप्पीनेस ले सकते हो, चाहे वो 5,000 का हो, चाहे वो 50,000 का। बस इतना ही बोलना था, क्योंकि मैंने देखा है लोग बदल जाते हैं क्योंकि कुछ टाइम के लिए होता है यार सब कुछ। हाँ, फिर कुछ टाइम के बाद सब चेंज हो जाता है भाई। अगर समझ लो तुम एक जगह पे नहीं जा रहे, ठीक है, तुम सबसे दूर हो गए, कोई लेना देना नहीं किसी से। जब तुम दोबारा वहाँ जाना शुरू करते हो, लोगों से बात होती है, वापस से इमोशंस आ जाते हैं, फिर वो इमोशंस इज इक्वल टू डिमोशंस। उस डिमोशन उसकी हो जाती है जिसके साथ तुम पहले मतलब जब वहाँ नहीं जा रहे थे उस समय बात कर रहे थे। तो वो तीसरा इंसान मैं हूँ जिसकी डिमोशन होगी, और वो दूसरा इंसान वो है जिसकी प्रमोशन होगी। बॉस एक ही था, बट प्रमोशन किसी और को दे दी। रहा वो तीसरे इंसान के साथ था, बट प्रमोशन किसी और की होगी, मेरी डिमोशन होगी। बट आई एम हैप्पी। लास्ट राइड, ये लास्ट राइड थी वैसे तो, अगर तुम्हारे को बताऊँ तो ये लास्ट राइड थी, ताकि आंखें खोलने के लिए मेरी, और आंखें खोल गई। एक बारी प्रॉपर कंफर्म हो जाए अब, ठीक है, उसके बाद फिर एक दिन लाइव करके सब बता देंगे, और टाइटल रख के ही बताऊंगा। बस चलो ठीक है गाइस, 3 बजने वाले हैं। सुबह मेरे को 9 बजे उठना है, 10 साढ़े 10 बजे मेरे को काम करना, मतलब 10 साढ़े 10 बजे शुरू कर देता हूँ। 10 साढ़े 10 बजे क्या, 9:30 बजे काम शुरू कर देता हूँ। तो कल तो वर्क फ्रॉम होम है, होम है, कल तो वर्क फ्रॉम होम है, कल सारा दिन मैं घर पे ही हूँ, और आराम से अपना लैपटॉप लेके बिस्तर में लम्बा पड़ के आराम से काम करूँगा। कंबल अपने लपेट के आराम से लेट के काम करेंगे, कोई कहीं जाना नहीं, किसी ने आना नहीं, ठीक है ना। और बस इतना ही है, तो ठीक है गाइस, फिर अभी के लिए तो नहीं करते हैं। आप सबको मिलेंगे कल एक ब्रांड वाला स्ट्रीम के साथ, तब तक टिल देन पीस आउट, थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। अपने घर वालों का ख्याल रखो, बट डोंट ट्रबल योर फैमिली एंड मदर, और किसी का दिल मत दुखाओ, और किसी को मत रुलाओ। बस इतना ही होगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय। उसका वीडियो लगे एक खास, सब्सक्राइबर को लो इनके या दिन पे, उसकी मेहनत से सब हो जाता है ओके। अपना स्टाइल अपना सोन
मजबूत सिंहासन ब्रिज शुरू किया जीरो से आज बन गया हीरो कंटेंट में चमक वाइब्स में फ्यूरो हर नए क्रिएटर को देता प्रेरणा वी ग्रेड बन गया गेमिंग की